After Mickey Arthur's absurd BCCI statement, PCB Chief Zaka Ashraf is at it again. Now that Pakistan cannot digest the humiliating loss against India at the Narendra Modi Stadium, Ashraf is behaving like a crybaby. He has lodged an official complaint to the ICC accusing BCCI of delaying visas and inappropriate behavior by Indian fans at the venue. We feel it is time to call Pakistan's hypocrisy over Ahmedabad crowd needs to be called out. We will do that on Off the Pitch with Ankit on India.com. And joining us now, we have with us Choyon. I'm sure you've seen, all of you guys have seen Choyon, hosting the Z News show on cricket. And it's the number one show in the country. It's Choyon's debut on my show. Thank you so much for joining me on this, Choyon Rastogi. Thank you. We have Thank you, Kapil Ankit. Vashisht. We have Kapil Vashisht is a Z News correspondent. He's currently in Pune covering the World Cup and he's traveling with the Indian team. So for him, it is like the big Indian Brahman. And also we have Biswajit Hi, Jha with us, Chen. who's an ex-sports editor and an Hi, author. Ankit. We have Arpit Right. Dubey, we have Akshat Jain, we have Sunny, and we have Ashutosh. Without wasting any time, let's start with you, Choyon. Choyon, you see, this is hypocrisy. Up front, this is hypocrisy. I'll tell you why. One, Hmm. Zaka Ashraf, now that they have lost the match, Mickey Arthur's statement came in, a very, very bemusing kind of a statement. And then here comes Zaka Ashraf, the tainted guy. He writes a letter to the ICC, and we don't know ICC stand as of now on this letter. This is the second letter he has written to them, and he has said he has accused BCCI and the Indian fans of misbehaving at the Narendra Modi Stadium on the day of the match, and also he has accused the Indian government and the BCCI for delaying the visas of the Pakistani fans and the journalists. Don't you Yeah, think this is hypocrisy? I can cite so many examples when Pakistani fans have been unruly with the Indian players. Who can true, forget true. about 1989 Chris Srikanth? He was punched Hmm. on his face, that guy. The guy was Yeah, punched yeah. on his face. So why is So, Zaka Ashraf making all of this? Choyan, I want to find out why is Zaka Ashraf so, making all of this drama? Do you think it so is I because think, they have this lack of identity crisis? They are lacking that? before anything, I would like to actually appreciate Pakistan Cricket Board, Zaka Ashraf, and Coach Mickey Arthur, because whatever they are smoking, it is of good quality. Let's appreciate the fact that whatever they are smoking is of good quality. Because 100%. I I mean Pakistan, the performance in this World Cup has been abysmal, to be honest. I mean, they lost their warm up matches. They lost their warm up matches to both good cricket playing nations. Then they played Netherlands. They won it. They played Sri Lanka. That match should have been won by Sri Lanka, but they managed to win it. And then they lost to India. I mean, it was a humiliating loss, to be honest. But now PCB, before even seeing whatever is happening, without even calling out what are the problems in the Pakistan cricket team, they are now calling out Indian Cricket Board and saying there's delay in visas. They are talking about crowd being unruly. I mean, what is Pakistan expecting when they are coming to India and play against India? What are they expecting? Do they expect some sort of this Aman ki Asha or something? I mean, this is a sport. This is something. This is the biggest cricketing rivalry we are talking about, and this biggest cricketing rivalry, crowd is a part of it. You need to. I Oh, mean, the you are biggest playing. part of this entire rivalry is the crowd, Choyon. Is the crowd. So if the crowd wants to, I mean, I can completely understand that if it is abuse, if it is racial abuse or something against some players, but it is not the case. It is You are all saying so. wishy-washy, Choyon. It's all wishy-washy over here. Mickey Arthur is saying they didn't play Dil Dil Pakistan. Boss, do you इस have a बंदे को list? दिल दिल इसको हिंदी इतना कैसे आ गया? He's Do been you have a brainwashed, this guy. I I mean, he's behaving like a Punjabi bag uncle who is saying that the DJ is not playing my list of songs. I mean, if you have a list of songs, please give it to the DJ at the stadium so that they can play those songs. They can play all the songs, all the Pakistani songs, all the Atif Aslam songs for what if they want. I mean, this is kiddish. I mean, the Pakistan needs to introspect today because the cricket that they are playing is actually not at the level that we would want Pakistan to be playing. I mean, we all want Pakistan to play better cricket so that there are better matches. I mean, this match, India versus Pakistan, was so one-sided affair. I mean,
honestly, It we turned out to be always an anticlimax. Such a massive build-up, it turned out to be an anticlimax. And honestly, Ankit, we Absolutely. always, it's been a history of India-Pakistan matches in the World Cup. We always bill it as the mother of all clashes, and what it turns out is always a one-sided affair in favor of India. So I think, and this statement regarding the visas, regarding crowd being unfair to Pakistan, I think they need to introspect about their batting, their bowling. They have a worst spin department amongst all those 10 teams. Even Adam Zampa and Maxwell makes a better spin combination than your Shadab and Nawaz. So I think Pakistan need to look at their cricket right now, not the other things that they think is the factor for Pakistan's poor performance. They are not focused, is what I understand from you, Choyon, in the Yeah. at the right things. Kapil, you know what baffles me over here? As reading the statement that's come out, the release that has come out. Nowhere is it mentioned, Kapil, that what a inappropriate behavior. So let me hypothetically assume over here that we are talking about that Jai Shri Ram incident. Yeah, Jai Shri Ram कोई गाली थोड़ी होता है. लेट्स टॉक एब्सोल्युटली अबाउट चयन, दैट अगर बिकॉज़ बंदे ने मेंशन नहीं किया है कौन सा स्पेसिफिक इंसिडेंट है बिकॉज़ उसको खुद पता नहीं कुछ तो करना है यही कर दो एक लेटर ही लिख दो भाई जस्ट टू ग्रैब सम आईबॉल्स राइट कपिल एब्सोल्युटली मैं वही बोल रहा हूँ, 1,30,000 लोगों की भीड़ वहां पर थी। अगर रिजवान के वहां से गुजरते वक्त कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए भी, तो इसमें कौन सा रेसिस्ट कमेंट हो गया, कौन सा इसमें एंटी डिस्क्रिमिनेशनरी कमेंट हो गया? तो पाकिस्तान की हालत वो वाली दिखाई दे रही है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, शिकायतों से ही पार लग जाए हमारा बेड़ा। आप इसको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंडर से अगर देखें, थोड़ा पीछे जाके देखें, तो ये वहां से शुरू करते हैं कि अगर आप एशिया कप में नहीं आओगे तो हम आपके वर्ल्ड कप में खेलने नहीं आएंगे। तो क्यों आ ये गए भैया? बचकानी एशिया कप में हरकतें हैं एशिया कप में क्राउड नहीं जमा तो बोल रहे हैं कि हमको पैसे दे दो, हमारे पैसे के लिए आप जिम्मेदार है, गेट मनी हमारा कमजोर हो गया, आपने बारिश की वजह से बारिश वाली जगह में मैच रखवा दिया। फिर बोलते हैं दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हैं। अरे तो मत भेजते, दुश्मन मुल्क में खेलने जा रहे हो तो। उसके बाद आपका सर्कल के बाहर बॉल नहीं निकल रहा है, बैटिंग आपकी चल नहीं रही है, गेंदबाज आपके लेवल लेवल के दिखाई दे रहे हैं। अपना क्रिकेट थोड़ा सुधारिए, शिकायतें कम कीजिए, अच्छा क्रिकेट खेल के दिखाइए। आप नंबर 1 टीम अगर वनडे क्रिकेट में है, कैसे बने वो सब जानते हैं, लेकिन अगर बन गए तो उसको रेपुटेशन को रखिए तो सही। तो पाकिस्तान इज बिहेविंग लाइक एक्चुअली a cry baby, as Chayan said, and very very disappointing for Pakistan to see this. अभी एक सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था, किसी ने लिखा साउथ अफ्रीका ने कल बोला है मैच के बाद की वाका वाका नहीं बजाया, इसलिए हार गए। Just imagine, Kapil, we have to hear such statements. I feel bad for you guys, man. तुम लोगों को क्या क्या झेलना पड़ता है. But Biswajit, on a serious note, do you feel it's a classical case of identity crisis for Pakistan and their only claim to fame is India? कहीं से इंडिया के साथ नाम जोड़ लो अपना, you will be in the limelight, the spotlight. Is this the ploy? Biswajit, what do you think? It's a strategized Uh, ploy by yes, PCB yes. over here. They are behaving like Naveenul Haq, who actually came to fame after had an altercation with Virat Kohli. So so basically देखो अंकित, ये एक्चुअली एक्सक्यूजेस है, ये जो है ये रेडी कर रहे हैं अपने देश को जनता के जवाब देने के लिए। द वे पाकिस्तान टीम हैज प्लेड, द वे they actually fielded a team which was not up to the mark. So they fielded a wrong team. All the players, the spinners, bowlers are not in good form, and they are not playing in the World Cup. So they have to this. They are answerable to their their audiences, their population, their crowd I back think home. Biswajit, So I Biswajit, think I think Biswajit, you've hit the nail on its head. Zaka Ashraf feels the heat. उनको पता है once he goes back to Pakistan, he's already in Pakistan. लोग उनको गाली देंगे कि तुम क्या करने so गए थे, इंडिया ने फंसा they के रख दिया हमारा, तो they तुम क्या they करने गए, had तो to do आंसर क्वेश्चन ही something. They क्लियर had है. to come up with करेक्ट। some. They had to come up with some this kind of वो बहाना एक लेम एक्सक्यूज लाना एक्चुअली। था, हाँ, lame And excuses, and they came with that, हाँ, चल, and Right? see, Okay. we There all is know they we all know perfectly. about I think we all these are all scripted things. We all knew it would happen. This is all scripted, and they are playing perfectly to the script. But that I think that people are these days people understand and people are aware of it. What these people are doing.
So I don't think that it is unexpected. It is on the line. Chayan, I know So you want to slip in a yeah, point. yeah, Chayan, just hold yeah. on. I'd like to request everybody in the panel, because it is a big panel, guys. Anybody has a point to make or you want to ask a question, please raise your hand. I'll come to you. Sunny, your hand is always up. I'll anyways come to you after this. Let Chayan Yeah. speak. Chayan, please, over to you. So all I'm saying is that there are three people who are going to lose their jobs after this World Cup is over for Arey, Pakistan. this guy One, Zaka Ashraf has lost his job 3 times in the past 12 months. so चौथा बार so होगा so बंदे का. सो वही मैं कह रहा हूँ, तीन लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं. एक कोच होता है, एक कप्तान होता है और एक इनका पीसीबी का चीफ होता है. So now coach is saving his skin by giving his absurd statements. Mickey Arthur has already given absurd statements by saying कि भाई ये दिल पाकिस्तान नहीं बजा. अब जाका अशरफ ये बता रहे हैं. अब it is just about time. Believe me, you will also get to hear some stupid statements from Babar Azam as well, because he will also have to save his skin after Pakistan gets folded from this World Cup, because this is not a team. I mean, people always say कि पाकिस्तान को हमेशा पाकिस्तान will do something. When you count them out, Pakistan comes back. But honestly, in this 10-team World Cup, Pakistan is looking weak at every department. But Spin you know, bowling, as Choyon, when the World Cup started out at the outset, when I looked at the Pakistan 11 or the squad, I felt they have a nice, well-rounded, balanced unit. And I felt they would be contenders in these conditions. But as it turns out, they're still blowing hot and cold, more cold than hot. true, true, absolutely. So Pakistan has been, and I would like to ask Kapil to come in this discussion, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक्चुअली उनके 4 पॉइंट्स हैं 3 मैचेस से, बट एक्चुअली बहुत कमजोर लग रही है. नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सी देयर bowling. They are talking about Naseem Shah. We spoke to Shoaib Akhtar, and Shoaib Akhtar also said Naseem Shah is no Malcolm Marshall. यार, अगर आपने, क्योंकि वो नहीं है वहां पर, And you're Shaheen talking about Afridi him is as, no Wasim Akram. एंड शाहीन अफरीदी इज नो वसीम अकरम. तो आप जो उनके पेस के बारे में बात कर रहे थे, यस, नसीम शाह, हारिस राउफ एंड शाहीन अफरीदी मेक्स अ गुड फॉर्मिडेबल पेस अटैक. But I think that pace attack works well in T20 format, because you have to only bowl 12 overs. As And in soon as Sina these, countries. And in Sina and in countries. Sina countries, yes, absolutely. In the conditions where you do not have swing, Shaheen Afridi is actually looking like their weakest link in their bowling department. Yes. देखिए, Sunny, मुझे लगता है let's कि compare. पाकिस्तान की टीम में मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम में ना अब दोस्तियां निभाई जा रही, क्योंकि बाबर आजम और शादाब खान हम सब जानते हैं, कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, एक जोड़ी के तौर पे है, अच्छे दोस्त हैं. तो शादाब खान की फॉर्म इतनी खराब है, उनसे बॉल का टप्पा सही से नहीं डल रहा. मैं आपको बता रहा हूँ, नेट्स में भी नहीं डल रहा है, मैच में तो भूल ही जाइए. तो वो उनको चाहकर भी ड्रॉप नहीं कर रहे. आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए शादाब का, पूरे एशिया कप का, उससे पहले And का जबकि बहुत Ramiz खराब कर Raja रहे ने हैं. बोला तो है, इमामुल, Ramiz Raja came out with a statement saying this guy should be dropped. Ramiz Yeah. Raja and Yes. Moin Khan. अरे वो रमीज राजा की सबको लग रहा है रमीज Sunny, राजा होना Sunny, नहीं Sunny, पड़ेगा. उससे biscuit, पहले शादाब उनका खराब. रिकॉर्ड बहुत खराब है. biscuit. लेकिन वो इंजमामुल हक की फैमिली से आते हैं, उनके भतीजे हैं, तो वो बाहर नहीं होंगे. आप देखिएगा, मुझे लगता है ये दोबारा नेपाल खेल जाएंगे. सरकार हो चुका अब है, ये नेपाल सरकार हो चुका है. Let it be. Sunny, there are other people in the panel also. Sunny, you had your hand raised. What was it all about? Sunny, please go ahead. अच्छा, चयन एंड कपिल, एक ना डायलॉग आजकल बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आप शायद देख रहे होगे, बाप कौन है, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है. ये डायलॉग कहाँ से आया पता है आपको? चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तो पाकिस्तान के फैंस ने मॉक करा था शामी और विराट कोहली को कि Yeah. बाप कौन है. तो ये निकल के कहाँ से आया है? इंडियन फैंस ने, अगर इंडिया के स्टेडियम के अंदर कोई गाने चल जाते हैं, जो कि उन्होंने कंप्लेन के अंदर कहीं पे लिखा नहीं है, अगर किसी स्टेडियम के अंदर आप एज्यूम करो कि 50 लोग किसी एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और 30 लोग किसी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेजोरिटी वाले गाने चलने चाहिए स्टेडियम के अंदर. दैट्स व्हाट आई थिंक, अगर एंटरटेनमेंट की बात करते हो, गेम की बात करते हो. पाकिस्तान के फैंस आप स्टेडियम में देख रहे थे, पाकिस्तान के फैंस आर नॉट देयर इन द स्टेडियम. वीजा इशू की ये लोग बात करें, अगर ये वीजा इशू की बात करें तो देयर आर सेवरल फैंस जो वीजा करा के इंडिया के अंदर आए हुए हैं. कपिल, मैं आपसे बात भी कर रहा था, आपने उन्हें शायद टिकट भी अरेंज कराया. आपने उन्हें शायद पाकिस्तान फैन को, कपिल ने शायद टिकट भी अरेंज कराया था. देयर वाज अ पाकिस्तानी फैन. तो अगर ये लोग बदतमीजी की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले एक और बता देता हूँ आपको, 2019 में दिनेश कार्तिक एक और टीममेट के साथ कॉफी पीने के लिए बाहर गए थे. तो एक पाकिस्तानी फैन उन्हें गाली दे रहा है. इट वाज रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करके लेके थे दिनेश कार्तिक, और वो रिकॉर्डिंग दिनेश कार्तिक ने. And they are talking about misbehavior over here.
These guys, they have got the gall to talk about bloody misbehavior over here. How dare तो they? 1997 How का dare they do it? 1990 अंकित 1997 का स्टोन पेल्टिंग कौन भूल सकता है? इंडियन टीम के ऊपर स्टोन पेल्टिंग हो गई, टीम को वापस स्टेडियम से आना पड़ा, तो दे आर टॉकिंग अबाउट दिस. अरे these are hooligans, guys. These are hooligans. They are hooligans. That is why they were not Exactly. given visa. Please understand that. देखिए बाकी सारी बातें आपकी सही है, सिर्फ एक बात से मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। और मैंने फैन से जब मैं बात कर रहा था तो मैंने उनको टोका भी इस बारे में। वो जब बोल रहे थे बिरयानी खाने आए हैं बाबर, ड्रेसिंग रूम में उनका ऐसा माहौल है, मारो मुझे मारो, वो सब तक ठीक है, लेकिन बाप कौन है ये सब थोड़ा बिलो द बेल्ट होता है। मैंने उनको बोला कि ये सब नहीं, ये सब नहीं बोले। कपिल, these guys they get very personal. इन लोगों को यही सबसे मजा आता है। धृति, I heard you. तो उसकी नहीं, मुझे लगता है कि उसकी जरूरत नहीं है, बिलो द बेल्ट जाने की जरूरत नहीं है। अरे इन लोगों के पास अच्छे शब्द नहीं है ना, स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं है। They have to bloody go under the belt to gain some brownie points. धृति, नहीं, उनको जाने दीजिए, उनको जाने दीजिए, हमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड कहीं पर। और जो फैक्ट है वो तो हम सबको पता ही है, सबको पता है। ये फैक्ट है। I believe we actually discussed it yesterday also. That there should be certain type of acceptance now. There's always India-Pakistan banter and it will go on forever. आप नहीं रोक सकते हो. You have to be prepared if you're going to Pakistan, and though I don't think that will ever happen since BCCI is the king. But if you're going to Pakistan, you should be prepared. People are going to troll you. They are going to drown you, and you should know how to handle it by yourself. Similarly, if Pakistan coming to team India, if Pakistan team is coming to India, they should have been prepared. This is going to happen because there's certain videos जब इंडियन प्लेयर्स को आपने स्लेज किया था, जब आपने ट्रोल किया था, अरे तो पाकिस्तान फैंस ने पंच किया था मुंह पे यार क्रिस श्रीकांत का 1989 में, उसको कपड़ा उपड़ा फाड़ा गया था. And I think it's very kiddish that going out in the media and cribbing about why Indian fans are doing this, it's absolutely rubbish. And they have not even specified. Dhriti, you understand? इन्होंने specify भी नहीं किया क्या है. What is the behavior that has caused them some problems? In fact, nobody here will deny कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है. लगे जय श्री राम के नारे लगे, and I'm not saying the nara is जय श्री राम गाली थोड़ी है यार. गाली नहीं है. कल तो जय हिंद बोलोगे in front of Mohammad Rizwan and Rizwan again. I'll exactly tell you why it triggered. The nara is not something that they are offended with. It is about how it was said. He is passing by and you are kind of taunting. That's what pinched them. But deep down you should be you should actually, when you are weak-hearted, you are the faint-hearted. Other than that, guys, please, one by one, guys. Sunny, one by one. Chayan, please. I am saying Mohammad Rizwan should be the last person who should be actually complaining about it. I mean, Mohammad Rizwan के बारे में जितनी कम बात करी जाए, चाहे वो पॉलिटिकल अपने स्टैंड को लेकर आने की स्पोर्ट्स फील्ड पर या फिर अपने रिलीजियस बिलीव्स को लेकर आने के लिए स्पोर्ट्स फील्ड पर, if sports field is all about playing cricket only, then Mohammad Rizwan should be the last person to be complaining about it. And it's not even like your team is performing and then you are being bullied. Your team is not performing here. ठीक है, आपकी टीम में सिर्फ एक इंसान मुझे ऐसा लगता है जो अपना 100% देता है, that's मोहम्मद रिजवान. I think that guy is really putting in efforts. उसके अलावा आपका बॉलिंग अटैक फील्ड है जो आप वर्ल्ड नंबर 1 ODI टीम बोलते थे. एशिया कप में एक जिस्ट मिल गया था हमको कि एशिया कप में बॉस यू आर नॉट प्रिपेयर्ड येट टू प्ले द वर्ल्ड कप. आपने अपनी कमियों पे काम नहीं किया. आप वही वैसी टीम जो एशिया कप खेली है उसको वर्ल्ड कप में लेके आए हो, एंड नाउ द रिजल्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. आप ट्रोल हो रहे हो क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है और आपने इंडियन प्लेयर्स को ट्रोल किया था. सो एक्सेप्ट दिस. You know, a few days ago, Akshat, Sunny, please. You know, a few days ago, Akshat, I was speaking to Chicago Chacha, and the guy has been making headlines. There have been media outlets who have been doing cover stories on this guy. The poor guy didn't have a ticket, and as Sunny pointed out, I think Kapil also helped him and all that at the stadium. When I was talking with Chicago Chacha the other day before the India-Pakistan match, I asked him about the Khatidari, the Mehman Nawazi they have been receiving in India, the Pakistani team especially. And you know what he told me, Chayan? You know what he told me, guys? He told me, इन लोगों को तो अपने घर में भी इतना अच्छा से ट्रीट नहीं किया जाता है. ये लोग अब इतने एडिक्टेड हो जाएंगे इंडिया के साथ, ये लोग हैदराबाद से लड़कियों को लेके शादी वादी करेंगे. That is exactly what he told me, quote unquote.
So you can understand, इन लोगों को पहला बार घी का स्वाद मिला है, so now they want everything. Getting my True. point? That's how it is. My Hindi And muhavra is a little bad, but that's how it is. but I think Akshat, the Akshat, cage is, as a young cricket fan, yeah. Akshat, as a young cricket fan, doesn't it hurt you to see this kind of enmity between the two sides? So much of mudslinging happening. Cricket has absolutely taken a backseat. It's everything but cricket over here. As a young cricket fan who plays cricket on every weekend, how do you feel? Thank you, Ankit, for the opportunity. Well, really, being a cricket fan, I actually feel like it's not good for the both of the sides. But when we watch things are going little bit, childish. I mean, what I see from Pakistan complaining about these things, it is looking like really it is childish. Why? Because what I think is generally the reason is they don't know what to answer to the Pakistan people. As they lost to India, they don't know what to answer. So this is just a childish move. This is just a childish move to show them कि हमारे गाने नहीं बज रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. अरे इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाता है या कहीं दूसरी यार कंट्री पे बहाने खेलने तो जाता ढंग है, के लाओ, तो वहां बहाने पे तो ढंग के लाओ. हाँ हाँ, इंडिया जब बाहर खेलने जाता है यार, तब वहां हिंदी गाने थोड़ी बजते हैं यार. तब इंडिया तो कंप्लेन नहीं करता है ऐसा कुछ भी कि हमारे गाने नहीं बजे, कुछ नहीं. इनको अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए अंकित. लिटरली इनकी बैटिंग बॉलिंग हर चीज पे इनको ध्यान देना चाहिए. जैसे कपिल सर ने भी बोला, शादाब खान, उनकी बॉलिंग भी ढंग से नहीं पड़ रही, ना कुछ सही से हो रहा है. बट वही चीज है, ये लोग ड्रॉप कर नहीं रहे. कॉम्बिनेशन वैसा बनता जा रहा है, ये लोग करते जा रहे हैं. अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं. आखिर में अपने लोगों को जवाब कैसे दें? कुछ तो बहाना ढूंढना पड़ेगा. बोले भी क्या, कुछ बोल भी नहीं सकते. और इंडिया की, और हमको पता ही है राइवलरी कैसी जाती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, कितनी हाइप होती है. एंड यू वोंट बिलीव अंकित, सबसे ज्यादा प्रेशर इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान पे प्रेशर होता है कि भाई इंडिया से कैसे भी करके जीतना है. और ये जब हारते हैं ना, तब ये बहाना ढूंढते हैं कि अब बोले क्या हम अब जाके कि हम हार चुके हैं. और जब ये ट्रोल करते हैं, Exactly. तब तब तो बहुत ट्रोल करते हैं. यू रिमेम्बर दैट टाइम इन द T20 वर्ल्ड कप हैपेंड व्हेन शाहीन अफरीदी कोलैप्स्ड और टॉप ऑर्डर तब हुआ था. तब कैसे ट्रोल कर रहे थे पाकिस्तान वाले. तब तो बहुत ट्रोल. तब किसी इंडियन फैन ने या किसी ने भी, इंडियन क्रिकेट टीम ने भी, किसी ने भी ये चीज नहीं बोला कि ये हुआ, वो हुआ, वैसा कुछ हुआ. नो रीजन. यस, इट्स योर स्किल्स, कोई बात नहीं. आप हारे हो, कोई बात नहीं, हारे हैं, वी एक्सेप्ट इट. हम इम्प्रूव करेंगे, वो चीज ही. ये बहाने चाइल्डिश यार, लिटरली. आई मीन इट फील्स लाइक, आई मीन क्रिकेट Right. इज गोइंग इन अनदर वे अंकल. I think not Right, only Chal. इन अफरीदी तो खुद ट्रोल कर रहे थे जब वो क्राउड के पास खड़े हुए थे कि किस तरीके से बिल्कुल. उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया. अरे किस दानिश कनेरिया ने तो बजा के रख दिया है. दानिश कनेरिया अनएक्सपेक्टेड लाइंस, चॉयर एंड कपिल, बट Yeah. उन्होंने तो बजा के रख Correct. दिया है. तो अर्पित, let's come to Arpit and Ashutosh over here. Arpit, you've seen how this entire drama has played out. Do you think, I mean, Pakistan have been caught again, trying to manipulate things, do these childish things? They have been caught again in the act. आपको क्या लगता है अर्पित, ये बचकानी हरकतें फिर से पकड़े गए हैं पाकिस्तान के? जाका अशरफ को अगर देखा जाए तो उनका टेन्योर सिर्फ 5 नवंबर तक ही है, जो कि वर्ल्ड कप से पहले ही है. तो मुझे लगता है कि उनका जो टेन्योर लेकिन उनको तो पेंशन वगैरह मिलेगा ना, फिर इतना चिंता में क्यों है? लेकिन ये मतलब पाकिस्तान का मतलब एक तरीके से मैंडेटरी होता है. आपने रमीज राजा को भी देखा था जब वो एशिया कप था, तब भी उनको बोला गया था कि ऐसे ही बात करनी है. तो मुझे लगता है कि जाका अशरफ भी उसी टोन में और उसी तरीके से आगे जाना चाहते हैं. और हम देखें कि मैचेस की बात करें तो उनको पता था कि वो सबसे बड़े स्टेडियम है, लेकिन वो इनएक्सपीरियंस है. उन्होंने कभी इंडियन क्राउड पूरा नहीं देखा. हमेशा वो न्यूट्रल वेन्यूज पे ही खेले हैं, जहाँ पे कुछ क्राउड पाकिस्तानी रहता है और कुछ इंडियन रहता है. तो 1,30,000 को देख के मेरे को लगता है कि वो एकदम से वो लोग डर गए होंगे एकदम. शॉक्ड है और उनको उनका परफॉर्मेंस उस तरीके से आया नहीं. तो वो यही है कि जो शॉक परफॉर्मेंस है, वो नर्वसनेस है, वो पिच के बजाय अब ऑन द पिच छोड़ के वो ऑफ द पिच दिखाना चाहते हैं. और उनके आगे के 2 गेम्स हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान है. तो वो वहां पे ये भी कह सकते हैं कि फिर हमारे डीजे वाले बाबू ने हमारा गाना नहीं चलाया, तो हम हार गए ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान से. क्या लगता है I'll- the future of Pakistan in this I'll tournament? Ashutosh, like to Diti, I'll add come on to what you. he said. Diti, I'll surely come to you. Just hold on. But then Ashutosh, क्या लगता है the future of Pakistan in this tournament, the marquee event that's happening in India? क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर अभी भी वो जज्बा जुनून होगा to qualify to the semi-final? Because initially when the tournament started out, मुझे लग रहा था ये पाकिस्तानी टीम और इंडियन टीम सेमीफाइनल में अपना जगह पक्का कर लेगा. लेकिन अब इंडिया के हार के बाद और जिस तरीके से हारे हैं, मुझे नहीं लगता है वो होने वाला है. आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर वो जज्बा जुनून होगा टू बाउंस बैक?
आई थिंक मुझे नहीं लगता ऐसा है कुछ, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया ऐसे हारे, जिस तरीके से इवन श्रीलंका की टीम ने उनकी बॉलिंग को डोमिनेट किया था, कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस आपका तोड़ता है। और आने वाले मैच भी जो पाकिस्तान के हैं वो बड़ी टीमों से, तो ऑफकोर्स मुझे नहीं लगता वो सेमीफाइनल में जाएंगे। और जिस तरीके की ये बातें बार बार क्रिएट की जा रही है कि माहौल को लेकर या वो सारा ये नहीं ड्रामा जो क्रिएट किया जा रहा है, एक्चुअल में वही है ना कि अटेंशन गेन करनी है थोड़ी सी और सिंपैथी गेन करनी है कि ऐसा था इस वजह से ऐसा हो गया। और इसका कुछ नहीं लग रहा, सेमीफाइनल की रेस से भी अब मुझे लग रहा है धीरे से बाहर हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक करेगी। Okay, we've got a fair idea as to what exactly must have transpired, and of course, Pakistan, they are at it, they are lying again. Our top band reads, "What's your problem, Mr. Ashraf?" But what we understand is, Mr. Ashraf is just a, what should I say, a pawn over here. He's being used. The guy is nervous. He does not know he will be able to save his job or not. So he's reacting under pressure. We understand all of that, Mr. Ashraf. But what we also understand is your Pakistani team has to play well to make an identity for themselves in world cricket. All of this Correct. politics and all will get you nowhere. And please stop your obsession with India, Mr. Ashraf. Thank you so much for joining me in this session on India.com and on Off the Pitch with Ankit. Thank you so much. Stay tuned to this website for all the latest across sports. And especially our focus is surely going to be on the World Cup this season. Thank you so much, guys. Thank you.